Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre méditation non, c'est pas quotidienne, du coup c'est hebdomadaire, du mercredi soir. Voilà, donc je vous invite à vous installer confortablement, le dos le plus droit possible, une position qui vous créez pas de tension dans le dos, vous fait pas mal. Mettre les mains directement sur les genoux. Prendre une grande inspire, une grande expire. Voilà, prendre le temps de revenir à l'intérieur de soi. Et on va monter la Kundalini et se donner un bandhan ensemble. On peut ouvrir les yeux pendant cette étape et suivre avec la tête nos mains. Et puis un bandhan pour chaque chakra, pour le Muladhara, Swadhisthana, le Nabi, l'Anahata, le Vishuddhi, l'Agya et le Sahasrara. On va mettre les mains en direction de la terre-mère. Demander à la terre-mère de bien vouloir accueillir tout ce qui fait obstacle à notre évolution, tout ce qui obstrue nos canaux d'énergie, toutes nos tensions, notre fatigue, tout ce que l'on souhaite se délester, dont on ne veut plus, qui encombre notre système subtil, notre corps. Toutes nos pensées qui ne sont pas vraiment reliées à l'esprit. Tout ça, on le remet à la terre. Terre-mère, merci de me nourrir, m'apporter de la joie, de m'émerveiller, de me remplir. On va mettre l'attention sur le premier centre d'énergie, le Muladhara, qui est en contact avec la terre. Mère Kundalini, par votre grâce, faites de moi une personne innocente, une personne remplie de sagesse, une personne pure.
et incarne la joie. Ce centre est le socle de notre Kundalini, le socle de notre méditation. Il nous permet d'être ancrés, équilibrés. À la Kundalini de traverser tout notre système subtil. C'est le centre le plus important, celui dont vous devez jamais arrêter d'avoir l'attention. C'est ce centre qui va détruire tous les obstacles à votre évolution. C'est celui qui vous protège de tout ce qui peut être négatif pour nous. Il nous protège de nous-mêmes, des actes que l'on peut faire à l'encontre de notre système subtil. C'est notre boussole intérieure, c'est lui qui nous guide. Grâce à lui, on sait où on va, comme les oiseaux quand ils doivent migrer. Alors prenez-en soin, chérissez-le, mettez-vous au contact de la terre, émerveillez-vous devant la nature, devant un plat cuisiné, devant les gens que vous aimez, devant une œuvre d'art. Cultivez votre âme d'enfant. Si vous faites attention à ce centre, celui-ci vous protégera. On va procéder à l'équilibrage du canal gauche, main gauche sur genou gauche, main droite toujours sur la terre-mère. Mère Kundalini, merci de nettoyer ce canal, obstrué par les émotions, notre contact avec le passé, notre procrastination. Terre-mère, merci de rajouter de la lumière et de la chaleur à ce centre.
On peut sentir la main gauche s'alléger ou au contraire chauffer. C'est que ça travaille. Puis on va remettre la main droite sur le genou droit et lever l'avant-bras gauche. On va maintenant équilibrer le canal droit. Mère Kundalini, merci de pouvoir apaiser mon activité mentale, physique, ma colère, tout ce qui m'amène à me projeter dans le futur. Élément éther, merci de rafraîchir ce canal, d'y remettre de la joie, de l'amour, de la douceur. On va reposer la main gauche sur le genou gauche, toujours paume de la main vers le ciel. Et avec notre main droite, on va remonter la Kundalini le long du canal central. Puis on peut mettre cette main 5-10 cm au-dessus de la tête, voire même le plus haut possible, ceux qui le souhaitent. Sentir la Kundalini traverser ce centre, le sommet de la tête, se fondre dans le tout. Puis on va garder notre attention là-haut. On peut reposer la main pour ceux qui sont dans ce rythme-là. Essayer de garder notre attention au-dessus de la tête. Et puis Vitali prendra la suite de la méditation. Observons à l'intérieur ce qui se passe avec nous et gardons toujours une attention au sommet de la tête. Essayons de ressentir aussi est-ce que la fraîcheur elle sorte de notre main gauche et de notre main droite. Essayons de voir ce qui se passe avec notre attention. Est-ce qu'on est toujours dans les pensées
où grâce à notre attention qui est établie, petit à petit, nous avons moins de pensées parce que notre attention elle est bien au sommet de la tête. Essayons toujours de garder notre attention au sommet de la tête. On va poser notre main gauche sur la terre. On va dire à l'intérieur, Mère, Mère énergie, la vérité que c'est toi, l'énergie qui réside dans notre premier chakra. Grâce à notre main posée sur la terre, nous te demandons, s'il te plaît, de remplir notre Muladhara chakra et tous les autres chakras avec la pureté et innocence. Mettons aussi notre attention au premier centre énergie, au Muladhara chakra, et observons si on arrive à sentir quelque chose. En même temps, on va demander, Mère énergie, s'il te plaît, grâce à notre main droite qui est placée direction vers la photo, établis en nous la sagesse et discernement. Grâce à la photo de chez Mataji, nous recevons les vibrations. Et les qualités de notre premier centre énergie, il s'établit en nous. Ils vont se manifester par la suite. Mère, s'il te plaît, faites de nous les personnes sages, pures et innocentes. On va poser notre main gauche sur le genou. La main droite, on va mettre sur la terre. Cette fois-ci, on va dire à l'intérieur, Mère énergie, c'est toi, l'énergie qui réside dans notre Muladhara droite, l'énergie destructrice de toutes les négativités qui sont déjà intégrées en nous. Mère, s'il te plaît, détruis toute la négativité qui est déjà intégrée en nous. Et par la suite, c'est toi l'énergie destructrice pour toute la négativité qui va vers nous. Et grâce à toi, la négativité, il ne devient plus capable de rentrer. Parce que c'est toi qui nous protège dans notre Muladhara droite. En même temps, nous pouvons demander aussi, Mère énergie, c'est toi l'énergie de notre canal gauche, notre canal de pur désir, qui passe par tous les chakras de côté gauche. Mère énergie, s'il te plaît, purifie notre canal gauche. Établis la pureté dans notre canal gauche. Établis les qualités de notre canal gauche. Que notre canal gauche, il se transforme en canal de pur désir.
Gardons toujours notre attention au sommet de la tête et sur la paume de la main gauche. On va remonter notre main droite sur le genou. Cette fois-ci, à nouveau, on va mettre notre attention sur notre énergie maternelle, sur notre Kundalini. Et à nouveau, on va demander notre énergie, la Kundalini, s'il te plaît, s'éveille en nous avec ta force maximale pour chacun. Que le maximum de tes fils possibles pour chacun peuvent traverser tous nos chakras, traverser notre septième centre, ce qu'on appelle le Brahmarandra, pour établir une connexion forte et stable. Et que la grâce de cette connexion, nous pouvons recevoir l'énergie à l'intérieur. Nous pouvons recevoir les vibrations à l'intérieur pour nous purifier et pour nous évoluer. Que chaque chakra en nous, quand il reçoit les vibrations, après la correction qui est faite par cette énergie, chaque chakra, ils peuvent évoluer en nous. Et que toutes les qualités de tous les chakras en nous peuvent se manifester dans notre quotidien. Que toutes les bonnes qualités qui vont grandir et s'amplifier en nous vont se manifester dans notre vie grâce à cette connexion. Plaçons notre attention sur le deuxième centre énergie, sur notre Swadhisthana chakra. Mère, la vérité, que c'est toi l'énergie placée dans notre Swadhisthana chakra. S'il te plaît, éveille en nous la créativité, la qualité de soi-disant centre. Grâce à notre soi-disant gauche et droite, nous allons demander, Mère, s'il te plaît, donne-nous pure connaissance. S'il te plaît, établis une bonne intention dans notre expression dans notre expression créative. C'est d'ici, de cette chakra, il commence notre canal droit. On va mettre notre attention sur notre canal droit qui traverse tous les chakras à partir de notre Swadhisthana chakra dans notre système subtil vers notre Sahasrara.
Mère, la vérité, et c'est toi l'énergie de notre canal droit. S'il te plaît, Mère, établis notre canal droit, que notre canal droit, il se transforme en canal de pure action. Gardons toujours notre attention au sommet de la tête et plaçons notre attention au niveau de troisième centre énergie sur notre Nabi Chakra. C'est le chakra, c'est le support de notre évolution spirituelle. Mère, s'il te plaît, purifie et remplis notre Nabi Chakra avec tes vibrations. S'il te plaît, établis en nous notre paix intérieure. Faites de nous les personnes totalement satisfaites. On va remonter notre attention sur notre cœur centre, sur notre quatrième centre énergie, sur notre Anahata Chakra. Mère, la vérité, et c'est toi l'énergie qui circule et établie dans notre cœur centre. S'il te plaît, remplis avec les vibrations notre cœur centre. S'il te plaît, établis en nous la confiance en soi. Faites de nous les personnes sans peur. Faites de nous, s'il te plaît, et éveille en nous la conscience que chacun, il devient conscient comme quoi il est totalement protégé par cette énergie qui nous entoure et qui nous protège. Gardons bien notre attention dans le cœur centre et au sommet de la tête. On va placer notre main droite sur le cœur gauche. Mère, s'il te plaît, remplis notre cœur. Remplis notre cœur avec l'amour infini. Faites de nous, s'il te plaît, les personnes qui génèrent l'amour dans ce monde. Faites de nous les instruments parfaits. Il envoie l'amour pour ce monde.
que nous devenons un instrument parfait. Et notre besoin, c'est juste d'envoyer l'amour dans ce monde, pour ce monde. Juste pour envoyer l'amour aux humains, aux animaux, aux plantes. Que partout où nous marchons dans ce monde, grâce à cette énergie, ça change. C'est dans notre cœur gauche, il est placé notre esprit. Mère, s'il te plaît, purifie notre esprit. On va poser notre main droite sur le genou. On va mettre notre attention sur notre Vishuddhi chakra, 5e centre énergie. Mère, la vérité, que c'est toi l'énergie qui réside dans notre Vishuddhi chakra. S'il te plaît, purifie et remplis notre Vishuddhi chakra avec tes vibrations universelles. Faites de nous les personnes collectives. Faites de nous les témoins, juste le témoin de cette jeu de la vie. Et on ne s'engage pas ce qu'il nous arrive avec notre ego ou notre super-ego. Que nous restons toujours témoins. Nous pouvons juste réagir quand nous sommes un pur instrument. Nous pouvons se mettre en action quand on est juste un pur instrument. On va remonter un petit peu notre attention. C'est entre les cils, il se retrouve notre Khamsa chakra. Mère, s'il te plaît, purifie et remplis notre Khamsa chakra. S'il te plaît, développe en nous notre sens de intuition. Faites de nous les personnes bien intuitives. Faites de nous les personnes facilement capables d'identifier ce qui est mal et ce qui est bien pour notre esprit. Dans notre quotidien.
On va remonter notre attention au niveau d'Agya, sur sixième centre énergie. Mère, s'il te plaît, purifie notre Agya chakra. S'il te plaît, pardonne-nous pour notre imperfection. Mais nous souhaitons d'y aller plus loin. Nous souhaitons devenir meilleurs. Nous acceptons notre chemin d'évolution. Mère, s'il te plaît, illumine notre cerveau. Illumine toutes les cellules de notre cerveau. Enlève tous les nœuds de notre cerveau. C'est toi l'énergie qui réside dans notre Sahasrara chakra. C'est toi l'énergie qui dirige tous les chakras dans notre Sahasrara chakra. Mère, s'il te plaît, fais de nous les personnes totalement intégrées. Nous sommes complètement réunis avec ce monde, avec la réalité, avec cette énergie subtile. Nous pouvons monter notre attention au maximum. Et vous pouvez poser des questions. Mère, dis-moi s'il te plaît, qui suis-je? Pourquoi je suis venu dans ce monde? C'est quoi ma mission? S'il te plaît, établis ma silence. Par ta grâce, s'il te plaît, accepte que je profite de rester dans cet état le plus longtemps possible.
Nous allons écouter Ganesha Tharvashirsha et Kavachov Devi. La première, c'est pour premier centre énergie. Quand nous allons écouter la première, gardez votre attention sur votre Muladhara chakra et au sommet de la tête. Et quand on va passer au deuxième, vous gardez votre attention sur votre cœur centre et au sommet de la tête. श्री गणेश अथर्व शीर्षम। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारपरतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे
वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदञ्च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। Shri Jagadamba, 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 Jagadamba Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devye Namo Namah. आइए अब संपूर्ण ध्यान एवं श्रद्धा के साथ विनियोग सहित आद्या शक्ति भगवती दुर्गा के परम दिव्य कवच का पाठ करते हैं। अस्य श्री चण्डी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजम् दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै यद्गुह्यं
परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् यज्ञ कस्यचिदाख्यातम् तन्मे ब्रूहि पितामहः ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्यास्तु कवचं पुण्यम् तच्छृणुष्व महामुने प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिता उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे तापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि यैस्तु भक्त्या स्मृतानूनं येषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशयः प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रिगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी विशारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषुवाहना ब्राह्मी हंस समारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुला शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम् खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शारङ्गायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधानित्यं देवानां च हिताय वै नमस्तेऽस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवभिनी प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्रि आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराणि नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी दिच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे दधस्ताद्वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षे चामुण्डा शवाहना जया मे जाग्रतः पातु विजया पातु तिष्ठतः अचिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षे तुमामूर्धनि व्यवस्थिता मालाधरी
रक्षेत् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धाय च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षे वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिर्कण्ठे नलिकां नलकूबरी स्कन्धयो खड्गिनी रक्षेत् बाहू मे वज्रधारिणी हस्तयो दण्डिनी रक्षेत् अम्बिका चाङ्गुलीषु च नखाञ्चूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षे महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रं गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयो नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादाम्बुलीषु श्रीरक्षेत् पादाधस्तलवासिनी नखान्तष्ट्राकराली च केशाश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामांसान्यस्ति मेदांसि पार्वती तन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वाला मभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी पुत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशुन्मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी बन्धानं सुपथा रक्षेन्मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेत्तु यदिच्छेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यं
ऐश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्। निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेष्वपराजितः। त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान्। इदं दिव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम्। यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः। दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः। जीवेत् वर्षशतं साग्रमपमृत्युः विवर्जितः। नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूतादिस्फोटकादयः। स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम्। अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले। भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः। सहजाः पुञ्जामाला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः। ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः। ब्रह्मराक्षसवेताला कूष्माण्डा भैरवादयः। नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदि संस्थिते। मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परम्। यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले। जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा। यावत् भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकारणम्। तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी। देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभम्। प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः। लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते।
nous pouvons tout doucement terminer notre séance de méditation. Essayons de garder votre attention au sommet de la tête. Et tout doucement, nous pouvons garder les yeux fermés. On va essayer de monter notre Kundalini tout doucement, en gardant une bonne attention toujours au sommet de la tête. Et là, quand on monte, on ouvre les yeux, on fixe un nœud symbolique. On va monter tout doucement deuxième fois. On fait deux nœuds symboliques. On fixe notre attention. On va monter troisième fois. Et on fixe 3 nœuds symboliques. Et là, on va faire 7 bandanes. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième. Voilà, nous sommes dans parfaite protection. On va se saluer, on va se remercier, on remercier à tout le monde qui était présent avec nous en ligne, aussi qui méditait avec nous. Voilà, on arrive à la fin de notre méditation ce soir. On se retrouve la semaine prochaine dans cette salle-là ou toujours en ligne avec certains. Une excellente soirée à tout le monde. À bientôt.